Hello students, welcome to OSSTET learning. तो आज मैंने पढ़ा टॉप 50 MCQs of CDP for OSSTET exam. So first question देखिबा. Development is best defined as ऑप्शन चार्ट देछि कोन increase in height only, increase in weight only, qualitative and quantitative change throughout life, change in behavior only. कोन हम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी काई खेला ना डेवलपमेंट ता कोन हमरो खाली पढिले कोन हम डेवलपमेंट होछि खाली हमरो कोन खाली हम हाइट बढ़ी जीवन हो कि खाली हमरो वेट बढ़ी जीवन हो बहुत क्वालिटेटिव चेंज हुए और क्वांटिटेटिव चेंज मध्य हेई था डेवलपमेंट रे और सेटा केबे जाय हुए ना माने पूरा जन्म रु टिल डेथ जाय हला थ्रू द लाइफ. हु प्रपोज द कोजेनेटिव डेवलपमेंट थ्योरी के प्रपोज करथिले जीन पाइजेट. According to Picet, object permanence develops during which stage? को स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करे बोली पाइसेट कहिथिले. ऑब्जेक्ट परमानेंस टा कोन माने गोटे जिंस यदि नथिबो भी पिला माने कम भाबे कि से टाइम रे कि हां ना ए जिंसरा अछि. को स्टेज रे हबंती सेंसरी मोटर स्टेज रे. Then the zone of proximal development was proposed by के प्रपोज करथिले. आंसर सी Vygotsky. Which learning theory was given by B.F. Skinner? देखो कहे जो operate conditioning. Intelligence quotient was introduced by option A Albert Binet. ये सब डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन केतरा कहि तापरे आउरी डिफिकल्ट लेवल मु आनिबे एटा सब इजी लेवल टाइप रो हैला आउरी यार डिफिकल्ट लेवल मु आनिबे नेक्स्ट वीडियो रे. Which psychologist proposed the theory of multiple intelligence? Option A Gardner. इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन माने पिला माने कौन भेदभाव भितर भेदभाव को छाड़ी कि पिला माने गोटेटी पढ़ेबा को गोटे समस्त को एका संगे पढ़ेबा को कौन कहते इनक्लूसिव एजुकेशन. तो ये चार्ट भितर कोठा होची ऑप्शन सी टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस. व्हिच मेथड प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग. ए चार्ट भितर कोडा एक्टिव लर्निंग हबो ऑब्वियसली डिस्कशन मेथड जोथरे कि टीचर आउ लर्नर एक्टिवली माने लर्निंग करि परिबे एमाने भी टीच करबे से माने भी बुझी परिबे ठीक से आराम से. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड केवे कंडक्ट हुए फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन हु प्रपोज्ड द psychosocial theory of development? Option B Erik Erikson. According to Picet, logical thinking begins in which stage? को स्टेज रे लॉजिकल थिंकिंग हुए concrete operational stage रे. Then which psychologist proposed the theory of moral development? को psychologist moral development theory टा propose करथिले रे Kohlberg. The process of learning by observing other is known as कौन माने एटा कौन माने जदी के न जानि भी थिबो ना से आराम से लिखि दबो ए ऑप्शन देखि देले हला जो लर्निंग जो प्रोसेस लर्निंग टा जो ऑब्जर्व करी देखा जाय सेटा कौन को लर्निंग को है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. Who gave the social learning theory? Albert Bandura. Trial and error theory was proposed by Thorndike. Classical conditioning was developed by के Pavlov. Operant conditioning के करले स्किनर और Pavlov कौन करले क्लासिकल conditioning. Which intelligence includes understanding one's own emotion? को इंटेलिजेंस रे हमें माने निज इमोशन को हमें बुझी पारिबू. ऑप्शन देछि कोन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी लॉजिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी म्यूजिकल इंटेलिजेंस. आर आंसर तुम मते कहबो ना मु कहबी मु भी कहि दउची तुम माने भी मन मन फर्स्ट ट्राई करो ठीक अछि. कोन हबो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. एटी देखो देखो ही कहि हे जो एटा इंटरपर्सनल माने निज स्ट्रेंथ कोन माने निज वीकनेस कोन निज माने हमरो कोटा हम करि परबो कोन नै सेरा कोन करि परबो से सब हम निज निजर इमोशन को हम बुझी परबो हला इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. Which assessment is conducted at the end of course? कोड़ा कोर्स एंड हला पर करा जाए समेटिव असेसमेंट टा. फॉर्मेटिव टा लर्निंग प्रोसेस भीतर करा जाए हला. प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज मेमोराइजेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, पासिंग एग्जामिनेशन, कंप्लीट द सिलेबस. कौन हुए कंप्लीट खाली सिलेबस कंप्लीट कर देले एम ऑफ एजुकेशन कि सेडा ता एग्जाम पास कर दबो सेडा एम ऑफ एजुकेशन ना पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हुए गोटे चाइल्ड एते ताको कौन कहते सेडा होची हमरो एम ऑफ एजुकेशन हला.
पूरा माने हमर होलिस्टिक डेवलपमेंट हबार अछि गोटे पिलार. Intelligence is best defined as the ability to कौन memorize facts, solve problems and adapt to the environment, read books, speak fluently. कौड़ा आमे इंटेलिजेंस टा कौन हमको माने कोडे सामर्थ्य करे solve problems and adapt to the environment. Who proposed the theory of multiple intelligence? एरा कहली ना कहनी बोधे हावर्ड गार्डनर है. मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी किए प्रपोज करते हावर्ड गार्डनर. Which assessment is used to identify students learning difficulties? कोटा स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज टा देखि परिबो ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. इंक्लूसिव एजुकेशन माने एटा तुम कहि जे आरो क्वेश्चन रे सेम क्वेश्चन खाली अलग टाइप ऑप्शन देछि है ना किछ नै सेम टाइप क्वेश्चन. Which of the following is a characteristics of child centered education? कोटा भितर child centered education characters? Teacher dominates the class, rote memorization, active participation of learners, one-way communication. Active participation of learners. Child center माने किए actively perform करंती learners. Then which factors affect the learning the most? कोटा को फैक्टर टा लर्निंग को बहुत अफेक्ट करे मोटिवेशन हाइट ड्रेस एज हाइट ड्रेस एज को ना हमको को लर्निंग को अफेक्ट करथो किस नहीं मोटिवेशन. तापरे क्वेश्चन नंबर 27 which teaching method encourage critical thinking? कोटा हमर एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग को. ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिटेक्शन मेथड, कॉपीराइटिंग. ऑप्शन बी डिस्कशन. डिस्कशन है हमें गोटे क्वेश्चन मन कर टीचर पचारे तुम भाविक से कहब कि नहीं से कौन हुए ना तुम क्रिटिकल जिनस भाविल थिंक कल है. which psychologist is associated with constructivism? किए यहाँ प्रपोज करथिले? ऑप्शन ए जीन पैजेट. Creativity refers to memorizing facts, producing new and original ideas, reading textbooks, repeating answer. कौन हबो? Producing new and original ideas. The best classroom environment is कौन fear based डर थिबो punishment होते सेंति कि friendly and learner centered. Which type of motivation comes from within the learner? Extrinsic motivation, intrinsic motivation, negative motivation, external motivation. से कहला कि माने लर्नर भीतर कोड़ा मोटिवेशन आसो इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स आर मेनली ड्यू टू जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस आती लर्नर भितर कौन पाई होता कौ थी पाई ना डिफरेंस आती एज पाई ना स्कूल पाई ना फैमिली पाई ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पाई हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पाई. Dyslexia is a learning difficulty mainly related to कौन रीडिंग ना राइटिंग ना मैथमेटिक्स ना हियरिंग. रीडिंग ये जाक टे इम्पोर्टाट ये जाक मेनली एग्जाम रे पड़ी थाए है बहुत थर भी ये सब पढ़ी. तो यहाँ जो तुम लिखुच नोट्स लिखुव तो से स्टार मार्क दे है. Which teaching method is most suitable for developing problem solving skills? कोटा कोटा हमर को मेथड टा हमर डेवलप करे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टा लेक्चर मेथड ना प्रोजेक्ट मेथड ना डिटेक्शन मेथड ना ड्रिल मेथड. प्रोजेक्ट मेथड. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन MCET testing only academic performance, evaluating only final examination marks, holistic development of the learner, promoting low rote learning. कोड़ा ऑप्शन C holistic development of the learner. The teacher's primary role in learner centered classroom is कौन प्राइमरी रोल कौन था टीचर लर्नर सेंटर रे. ऑप्शन बी फैसिलिटेटर माने से खाली गाइड करि थाए. Which psychologist proposed the theory of cognitive development? किए करथिले cognitive development एटा तो समस्त कहि परबे जे बीडी पिला जति कि तोरत माने कि माने एटा ताकर बेसिक गुडे कहय गल हला कि जीन पैजेट. Which of the following is an example of positive reinforcement? कोड़ा positive reinforcement रो example एठी. Scolding a student, giving punishment, praising a student for good work, ignoring good performance. आ भितर कोड़ा हबो पॉजिटिव कोड़ा हमरो praising a students for good work. माने गोटे स्टूडेंट्स को हम जेतेले प्रेज करबा से माने कोन हले माने बेसी मोटिवेट हेबे आ भलो रे आउरी तांको माने कोन गाइड हे कि कोन भलो काम भी करे भलो रे पढिबे चाहबे हला. तो ऑप्शन सी
Which is the most effective teaching aid for science class? कोड़ा भितर माने जो चारटा अछि या भितर कोड़ा हो जे हमर effective teaching aid of science for science class कोड़ा पे कोड़ा हमर blackboard की ना detection ना memorization तो हमर रहिला कोन practical demonstration हैला practical कले हम science class को easily मन रख परबा बा बुझी पारिबा. The main objective of assessment is rank students, improve teaching and learning, punish weak students, conduct examination only. कोड़ा improve teaching and learning. Bloom's taxonomy is mainly related to personality development, learning objectives, intelligence और moral development. आ भितर कोड़ा हबो Bloom's taxonomy टा कोड़ा कुए learning objectives. Which domain of Bloom's taxonomy deals with emotion, attitude and values? को domain टा cognitive ना psychomotor ना affective ना social. Emotion, attitude value कोड़ा करिवो affective domain हैला. Which assessment is conducted before starting instruction to know students prior knowledge? गोटे हमर समेटिव टा केते होउची एंड रे होउची फॉर्मेटिव टा लर्निंग प्रोसेस भीतर होउची डायग्नोस्टिक टेस्ट करा पे होउची आ एडा लास्ट रहला कोन प्लेसमेंट हैला एडा होउची कोन प्लेसमेंट असेसमेंट टा. A teacher should encourage question in the classroom because it wastes time, creates discipline problem, promotes curiosity and critical thinking, increase homework. कोड़ा ऑप्शन सी promotes curiosity and critical thinking. एटा पाई से माने कोन होंती माने एनकरेज करे कोन माने क्वेश्चन करया पाई सब हला हुए टीचर माने कोन एनकरेज करले कोन पाई करन ना प्रमोट्स कि तमर कौतूहल बढ़िया पाई आ ता सहित क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ू बोली माने क्वेश्चन करंती. Then asla 45 question number 45. Which of the following is not characteristics of an effective teacher? Empathy, patience, bias towards some students, empathy भलो, patience भी भलो, good communication भी भलो. तो एटा सीटा होची हमरा दरकार नुह हला effective teacher पे. Which teaching method is most suitable for developing scientific attitude? कोड़ा lecture method ना demonstration method ना active based learning ना detection method. Option C, active based learning. Children learn best when they memorize without understanding, they actively participate in learning, they remain silent throughout the class, they copy notes only. कौन से बेस्ट पढ़ी पारे they actively participate in learning. एटा पुणी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाइए तो एटा खाली देखिए तो ऑप्शन में भी पुणी अलग अच्छी हाँ ऑप्शन सेमती ही अलग अलग टिके टिके अच्छे तीन टा क्वेश्चन माने को टाइप रे पढ़ी पारे सो चेक कर दियंतु हला. Which of the following is an example of formative assessment? कोड़ा भितर formative assessment माने कोन लर्निंग माने ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस रे ही से असेसमेंट टा हेइथाय कोड़ा ऑप्शन बी वीकली क्विज विथ फीडबैक. आम आज पढ़ाई एति कि ता भितर पुणी सप्ताह को थरे क्विज पचार देबु तापर ता माने आंसर जाक माने कहबे बाबा कोन माने जदि किछि बुझा न पड़थो तन कहबे सेटा. The ultimate goal of children development एटा होछ हमर लास्ट क्वेश्चन ओके. The ultimate goal of child development and pedagogy is to option A increase examination marks only, option B promotes holistic development and meaningful learning. Obviously option B ही पढ़ू पढ़ू ही आंसर आस जिवो कि एटा होछ हमर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी रो मेन गोल हैला. सो एटा रहला हमर कोन टॉप 50 एमसीक्यू. तो नेक्स्ट पार्ट रे आउरी आर एटा इजी फॉर्मेट रे इजी बहुत एते किछ डिफिकल्ट नै देन तार और मीडियम आसीबो तार और डिफिकल्ट फॉर्म टा आसीबो. सो thanks for watching. See you in the next video. Bye.